क्वेश्चन राकेश जी, आपसे सवाल यहाँ यहाँ रंगने पसंदी के बाद आपने दोबारा इस तरह से एक अतीत की बहुत खूबसूरत सी कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ा है। ऐसा करते हुए एडिटिंग टेबल पे आपको खुद से लड़ाई करनी पड़ती है क्या? ये सवाल एक्चुअली आजकल का जो सिनेमा है और उसका जो ग्रामर है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बता दूं, अगर 2 मिनट है तो। क्या है, कैमरा फोटोग्राफी से आया है, एक्टिंग थिएटर से आया है, राइटिंग तो राइटिंग से है, संगीत की दुनिया से, क्लासिकल फोक एंड ऑल दैट। एडिटिंग ही ऐसा आर्ट फॉर्म है सिनेमा, जो सिर्फ सिनेमा की वजह से आया है। ये सिर्फ 100 साल पुराना है और ये दिस इज द मोस्ट कहते हैं ना, द बेबी आर्ट फॉर्म इन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। हम सब मिलके बनाते हैं, द कोलैबोरेटिव आर्ट। तो एडिटिंग अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। आजकल सब डिजिटल हो गए, तो हम स्टोरी को नॉन लीनियर भी बोल पा रहे हैं। पहले बिगनिंग से शुरू करते थे, 1 2 3 4 से 10 तक जाते थे, अब 2 से 12, 12 से ये। एट द सेम टाइम हम आपके ख्यालों में भी घुस सकते हैं कि बाजे वक्त आप ट्रेन में बैठे हैं, बट आपको याद अपने बचपन के आगे, तो वी कैन आगे पीछे वो दोनों स्टोरियां चला सकते हैं। तो बहुत सिनेमा के जगत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये सिर्फ 100 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। आगे चलेंगे तो अभी वर्चुअल और ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी और ये सब आने वाले हैं। एडिटिंग तो फिर पीछे रह जाएगी। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 2 कहानियां और बहुत खूबसूरत कहानियां, उन्हें जोड़ते वक्त आपको बहुत खूबसूरत से जो दृश्य आपने या गुलजार साहब ने लिखे होंगे वो काटने पड़ते होंगे, तो उस वक्त आपका अपने से ही एक वो होता होगा, बंद होता है कि ये चीज, क्या चीज रखूं और क्या चीज छोड़ूं, खासतौर पे जब गुलजार मतलब इतनी प्यारी स्क्रिप्ट हो, फिर उसको आप सब लोग मेहनत से काम करते हैं और उसको शूटिंग करते हैं, बहुत मटेरियल होता है हमारे पास। और बट एंड में जो कहते हैं कि फिल्म टेबल पे बनती है, एक फिल्म का स्क्रीन प्ले कभी खत्म नहीं होता। एक लिखा जाता है, एक शूट किया जाता है, एक्टर्स उसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, डायरेक्टर अपनी तरह से, म्यूजिक डायरेक्टर अपनी तरह से, कैमरामैन, फिर एडिटर के पास से वो पहुंचती है बात, तो वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करती हैं और फिर वो उस कहानी को वैसे बताते हैं। तो स्क्रीन प्ले बार बार लिखा जाता है और जब ऑडियंस देखती है, हर एक ऑडियंस का मेंबर उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। Thank you for your question. Hi, this is on your right, Rakesh, Sohit from Yamshan. Congratulations to the entire team and a great launch. मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मिर्जा और साहिबा की जो कहानी है पहले की, और आपने आज उनको रिलेट करने की कोशिश की। हर सर्जन को आपने ऐसे नहीं सोचा कि उनके फिजिक्स पे थोड़ा वर्क कर लिया जाए, यू नो, विद हैविंग सम मसल्स आल्सो, आई थॉट दैट हैविंग योर माइंड प्रोग्राम हर्ष आल्सो। हर्ष से पूछा जाएगा कि वो अपने डैड की तरह ही, यू नो, लाइक he also has maintained his self. So okay, the character of this film, I think we got too used to these 6 packs these days. Number 1. No, ये भेड़चाल जो है. Number 2, Mirzya's character was not that of a boxer. And neither. So Harsh has given me 18 months. Now hear me out. Since we are talking about prep. 18 months before the shooting, don't get me wrong. In that he has worked on the role of first the contemporary character, which is Munish in the film. So for them, in their first film, they are actually doing double roles in their first debut film. And that character required a certain physicality. Correct? Then after finishing that, we took a 7-month break because they had to prepare in a different way for another film within a film for another character to be in a different zone altogether. It's not easy, and in your first film. For 6 months they prepared again. There is something called horse riding and mounted archery. If you study that, when you are a horse rider, you got a very lean and athletic look about you.
You don't have a six-pack look about you and all that. So I'm sure when we make a movie about a boxer, we'll be satisfied. हर्षवर्धन, यहाँ मेरा सवाल आपसे है, जब आपने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी, आपका रिएक्शन क्या था? First of all, we actually met in 2008, I think, and we kept meeting every couple of months after that. And at the time, Rakesh sir had mentioned that he was working on the story of Mirzya and Gulzar Saab was writing a screenplay. And I was actually still in college at that time. I was what, 18, 19 years old. 25 now, so this is a conversation that's been going on for a very long time. And then I went back to college after the first interaction with Rakesh sir, and I actually did what I could, try to find whatever I could about the story on the internet. And you know, obviously it's a romantic tragedy, and it's very different from the other romantic tragedies because it's the two lovers themselves that make decisions that eventually determine their destiny. You know, so it was very complex. And it was very brief and very vague on social media. So as kind of time went on, we kept reconnecting, and then eventually, I think in June 2013, after talking for like 2 or 3 years, we finally decided that it was the right time to kind of embark on this journey. And until then, I hadn't really heard anything from the script. So then finally I sat with Mehra, and then he narrated about 10 or 15 pages because the script was still a work in progress at that time. And just the beauty that which it was kind of written, because you know, it's very rare these days to find scripts that are very poetic and very romantic. And I think for me, you know, I read it when I was 22, and I was reading so many other romantic stories and scripts, but I think that this is the most contemporary romantic film ever. You know, I mean, at least from what I've read, the interpretation of it. You know, so I was completely blown away. You know, it's one of those things that you hear it, and you're like, I have to, I'll give anything to be a part of this film. You know, I mean, it's romantic, it's complex. You get to play two characters. It's poetic, it's visual, it's musical. So it's like a fever dream. You know, so it's a dream. कितना डिफिकल्ट था आपके लिए इस कैरेक्टर को निभाना? तो एक्चुअली दो किरदार, एक है आदिल का और एक है मिर्जा का. तो first we worked on Adil a lot. Actually, we worked on both simultaneously. And when I heard the story, I knew that you know, the whole film depends on my ability as a writer and an archer. Because Mirzya is the best, you know, and I'd never been on a horse, so it sounds very easy, but actually when you start doing it, you know, and then you know the script, so you know how sir is going to shoot it. It's not like other films where, you know, you cut to a close up and then you cut to the stunt double. It's not one of those films. So you know, I knew the level that I had to kind of reach to, and I moved away to Delhi for 6 months first, because you know, Bombay doesn't have too many places where you can learn that skill. So I learned the basics there for 6 months, and I had a lot of falls. Then I came back, then we continued, and you know, I mean, it's a 20-minute answer. I can't really sum it up for you, but you know, it was basically very difficult. Thank you, Harsh. Thank you so much. Is there a question for Sayami? Yes, ma'am, to the blue. Hi, Sayami. Hi, namaste. You both looking very stunning. Thank you so much. My question is for you and Harshvardhan both. As we just heard, Anilji said that Kapoor Parivar has given a greatest contribution to the films, and so is you. Thank you. Your family is also very much connected, given a lot of contribution in this thing. आप दोनों कितना प्रेशर महसूस करते हैं इस वक्त? फिल्म रिलीज पर है और बहुत ज्यादा लोग आपसे उम्मीदें रखे हुए हैं. मैम, प्रेशर तो मतलब I hope, at least I'll speak for myself, if I kind of have 5% of the genes that my grandmother or my aunt has, तो ऐसे लगेगा कि थोड़ी बहुत एक्टिंग आती है, but प्रेशर नहीं है क्योंकि दोनों हर्ष ने और मैंने we've given it our best,
And when we have guidance like Rakesh sir and Gulzar